Okay, so now already we had discussed all the operations related to insertions of nodes into single linked list, right? Okay, so all the operations were related to inserting in data. Now we will just discuss today about how to remove particular data into linked list. Let's say the 7 okay, regarding removing data from the list. Removing data from single linked list. Got it? That is very simple. Let's try to understand by simple steps first. Let's say this is head is the pointing to first node. Okay. Head points to first node. Let's say the first data is 100. Then this points to second node. This data is suppose 200. Now again, this points to this. Let's take one more data, that is 300. Okay, let's check one more, that's it. So I have a new data 400. And try to understand very carefully, no repetitions will be needed. If anyone asks to repeat the concept, that means somewhere you have missed your seriousness. Think possibilities number 1. Think possibilities number 1. 1. I am trying to remove first data. First data. Now just copy down this again so that in the same figure we shall try to understand every steps. Common sense lagaiye, everyone. If I am going to remove the first data, that is, if I am trying to remove 100, तो 100 तो first में available है. Okay, so once you get remove 100, what will happen? Socho. Now after this node gets removed, head starts pointing to second nodes, right? And क्या इस काम को करने के लिए जावा में आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं दिख रही है? Always you will be doing traversing process. And same like taking 2 pointers, what we did into the previous day sessions. One is T and the other one was parents, that was before T. And we used both the pointers for traversing, right? The same thing I'm checking, so you will not have any confusions. So if let's say I am going to remove 100, if I want to remove 100,
So you will start traversing process. When you do the traversing process, T will be referencing or pointing to this first node, and P is pointing to before first node. That is always null because वो पहला node ही 100 है. So somehow by doing some checking, some test, if once you come to know that T is pointing to first node itself and that has to be deleted, what happens? It has to reference now second node. For referencing, for pointing head to second node, what you need to write? How point second node to, sorry, point head to the second node. For doing these operations, what you will write in Java language? Tell me. Head assigns T dot next. Is it not? क्या ये बहुत difficult task है? No. Now, let me consider conditions number 2. Situations number 2. We are trying to remove the data, remove first data तो हो गया. Let's say I want to remove 400. Remove हो गई ये 100. तो 100 मैंने ऐसा लिया जो कि फर्स्ट डाटा हो गया. Got it? In the same manner, I am saying remove 400. तो 400 कैसा डाटा है? Last डाटा. All combinations हम try करके देख रहे हैं. If you are trying to remove last data, what happens? गौर से देखो. You will just revise the traversal process. Now, जब आप 400 remove करोगे तो after traversal process, do the traversal. After traversal process, T will point to last, right? Variable T will point to last, है ना? T last में होगा, P तो just उसके पहले होगा, right? तो ये आपका होगा T and this is P. ठीक है?
Now, if you are thinking of removing this data, कौन सा? Last data. That means P next में आप null डालोगे. That is, you are right. So for doing this, what statement you will write? You will write, what statement you will write? P dot next is equals to null, और क्या हम और कुछ भी लिख सकते हैं? और दूसरा भी कुछ हो सकता है possibilities? Can anyone tell me? Yes. TR कुछ भी, तो मैं यहाँ T नाम दिया हूँ तो T ही लिख रहा हूँ. आपने TR बोला, that means traversal pointer का नाम TR हो गया. So you can write the same because T dot next में भी null ही है. तो both are same but two different statements, right? तो हमने फर्स्ट डेटा रिमूव करके देख लिया, लास्ट डेटा रिमूव करके देख लिया. अब कौन सा पॉसिबिलिटीज बच रहा है? मिडिल डेटा, राइट? मिडिल डाटा हो गया. तो दिस इज नंबर 3, मिडिल डाटा. Let me just copy down and try for middle data. One second. Okay, there was very important call. Now just here, अब लास्ट, हमने तो लास्ट ट्राई किया, अब कहीं मिडिल डेटा देख लेते. और चीजें जब क्लियर हो जाएगी तो कोड इज वेरी इजी. कोड तुम्हें लिखने के लिए हम छोड़ देंगे, सारा कोड के हम ही से टाइप करवाओगे. जब समझ जाता तो यू हैव टू ट्राई. नाउ मिडिल डाटा. मिडिल डाटा मतलब एज्यूम कर लो, सम मान लो हम 300 रिमूव करना चाहते हैं. नाउ फॉर 300 when you do traversal, हमारी T will point to 300, right? Okay, and P will point to this. Now अगर 300 वाली नोट हटानी है तो this kind of thing has to be done. Ab now just help me in writing what statement you will write for creating this link. Quick. This, your statement was right earlier. Yes,
P dot next assigns T dot next. अब देखो तो गौर से इन ये केस नंबर 2 में अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट लें और केस नंबर 3, इज देयर एनी डिफरेंस इन केस नंबर 2 और 3? अगर मैं इस स्टेटमेंट को ना लूं एंड इस स्टेटमेंट को ले लूं तो केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है? नो, राइट। तो हम केस नंबर 2 को इंप्लीमेंट करने के लिए, दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट जो पी डॉट नेक्स्ट असाइंस नल है, हम उसे नहीं लेंगे। तो हमें एक ही टास्क से दोनों काम हो जाएगा। नाउ टेल मी रिमूवल ऑफ, टेल मी द टास्क। मैं पहले लिखने दो, रिमूव डाटा फ्रॉम SLL. Should I now leave this task for you? Do the traversal same like earlier what we did. And after traversal process, there will be only two cases, case 1 and case 2. Case 2, 3 तो combined हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, note, we can see that case 2 and case 3 are the same. So there will be only two cases if data is found. अगर डाटा होगा तभी ना, डाटा ही नहीं है तो अलग इश्यूज है। Got it? Now my point is, can you implement this logic by your own? Try करो, नहीं होगी तो tomorrow I shall do it. Okay, so I think this is very easy. All the concepts have been explained, all the hints have been given. Just you have to create one functions, and by considering all these situations, you have to consider, will you do the code? Quick response, fast. Okay, try out. So in this manner, you go on creating all different operations. Now let's talk about different data structure, that is SLL, DLL. Right now, I shall talk about DLL, that is doubly linked list. Double linked list. Okay. This is double linked list. As usual, same extension of single linked list. Same extension of single linked list. There will be a head that will point to first node. Head, it points to first node.
head points to first node. Okay. First node points to second nodes. देखो यहाँ पे. This is like this. Now, first node points to second node. And here I write, okay, second, okay. This is pointing to second nodes. This is pointing to, बस एक और ये करके हम एक्सप्लेन करते हैं. ओके. अब देखो, every node is having basically two pointers to point next node as well as point previous nodes. The benefit will be of that is we can do the traversal in both the ways. है ना? Previous, then I have data, and then I have next. Right? अब इसका टास्क हो गया नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना. And what about task of this is previous node को पॉइंट करना. राइट? एडवांटेज क्या होगा, फायदा? देखो, इन द केस ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, इफ आई एम एट 300, लिसन माय प्रॉब्लम वेरी केयरफुली. अगर मैं 300 पे हूं तो कैन आई कम बैक टू 200? आंसर नो. तो मैं सिंगल लिंक लिस्ट में लिस्ट के अंदर आगे तो जा सकता हूं, yes, but we cannot come back into the single linked list. This is what is the difference between single and double. In double, you can traverse in both directions. Note, in single list sort में लिख रहे हैं, we can बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें जरूरत पड़ती है दोनों डायरेक्शन में मूव करना. We can traverse in only one direction, whereas in DLL we can traverse in both directions. We can traverse in both directions. Both directions. This is the basic difference. That's it. And both directions पे traverse करने के बहुत फायदे मिलते हैं. Now think, सुदर्शन हो गए, बोथ और बिर्थ. बोथ एक सेकेंड, स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो गई. बोथ, BOTH. ठीक है? इन बोथ डायरेक्शंस हम 100 से 200 पे जा सकते हैं. तो 100 से 200 पे जाना होगा तो कौन सा लिंक यूज करेंगे? नेक्स्ट, राइट साइड वाली.
और अगर हमें 300 से 200 पे आनी है तो कौन से लिंक यूज करेंगे? प्रीवियस। राइट साइड वाली नेक्स्ट है और लेफ्ट साइड हो गई प्रीवियस। ओके, so in which type of application double linked list will be used? Wherever you need to traverse in both directions. Of course, every field will do the memory consumption. So in double linked list एक एक्स्ट्रा फील्ड बढ़ गया ना, that will increase the memory consumptions, right? So compared to single, there will be more memory required in double linked list, in DLL ज्यादा मेमोरी का जरूरत पड़ेगा। Got it? Now you can see the picture very carefully. जो भी प्रोग्रामिंग स्ट्रेंथ आइडिया आपको डेवलप हुआ है while learning of single linked list, with the same idea can't we implement? Can you implement all those operations what we created in double linked list? Only while creating you will have to think the previous links connections also. तो हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशंस अभी तक बना लिया? In the case of single linked list, append, prepend, that is add beginning, add end, display, insert beginning हुई, add beginning हुई गई, then remove data आपके लिए task दे दी गई, जो आपने कहा you will, of course you will try. बहुत simple है, hardly it is the matter of 2 minutes. अगर पूरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, समझ रहे हो, तो ट्रैवर्सल करनी है। ट्रैवर्सल करने के बाद हमें सिचुएशन देखना है, डाटा फाउंड है या नॉट फाउंड। डाटा फाउंड होगी तभी तो डिलीशंस होगा, और डाटा फाउंड होगी तब दो केसेस हो गए। इफ इट इज फाउंड इन फर्स्ट नोड, फर्स्ट केसेस, देन दिस इज द कोड। इफ इट इज फाउंड इनटू द आइदर सेकंड और थर्ड, अब तो दोनों एक ही हो गया, सो सेम कोड। दैट्स इट। यहाँ पे बस हम लिंक रिक्रिएट कर देते हैं। देन गार्बेज कलेक्टर रूटीन, जैसे ही लिंक रिक्रिएट होगी, it is the now matter of garbage collector to release the memory consumed by this node 300. Because you know the concept in Java language, programmer needs to only allocate memory, but memory destructions will take place automatically will be taken care by garbage collector feature, garbage collections, that is called. Now, why can't you sit and create by your own? If you cannot create, again you will be having clear help. तो हम जब डबल लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, बस सिंगल लिंक लिस्ट के कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे, and wherever the modification is required, only that will be done. If you are able to understand, easily you can create. So all these operations you have to create. Perform following methods या operations, कुछ भी बोल सकते हो। Operations on DLL. Number 1, append. Number 2, display. Number 3, add at beginning. Number 4, add
A after, add, before. If all you have tried implementing in single linked list, just you have to think, do the paperwork, think the arrows. Then 6, remove any data. REMOVE, remove data. किसी भी डाटा को रिमूव करना. नाउ रिमूव की लॉजिक थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे इन डबल लिंक्ड लिस्ट. हाउ वी डू. Let us see. I want to remove 200. Remove 200. What will be the logic? अब यहाँ पे जैसे ट्रैवर्सिंग करने के लिए सिंगल डबल पॉइंटर लेना पड़ता था सिंगल लिंक लिस्ट में. No need to take 2 pointers, 2 references. ये टास्क को करने के लिए हमें बस एक ही काम करना होगा. Take only one reference variable. Do the traversal. अब देखो, अब जब हम ट्रैवर्स किए तो फर्स्ट टाइम 100 के पास है, हमें रिमूव 200 करना था, फिर एक बार आगे बढ़ी. दैट मीन्स माई पॉइंटर जिसका नाम रेफरेंस वेरिएबल टी है वो हमारा 200 के पास आ गया. अब हमें क्या काम करना है, गौर से देखो. यूजिंग टी हम सारे लिंक को रीसेट कर सकते हैं. ध्यान पूर्वक देखो. आई एम जस्ट गोइंग वेरी स्लोली. You will not have any problem. Look, अगर ये 200 नहीं है तो क्या होगा? This link will be attached like this and this will be attached like this. हाँ या नहीं? मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं. यस, नंबरिंग देखो जरा गौर से. हर ट्राई करो. जिसे लग रहा हो कि आई एम वीक, हमें कुछ चीजों को समझने में कठिनाई है, टाइम लग रहा है, आप ट्राई करो. नंबर 1 and number 2. Now let's create link number 1. What we write? सोच के जरा बताओ. लिंक नंबर 1 क्या लिखना होगा? सब कुछ टी से ही होगा. देखो, टी इज पॉइंटिंग टू 200 node. That is the node which is containing 200. तो टी के प्रीवियस जो है वो तो इसको पॉइंट कर रहा है. गौर से देखो, मैं समझने में दिक्कत होगी तो मैं कलर बदल के लिख देता हूं. इसको पॉइंट कौन कर रहा है? टी डॉट प्रीवियस. हाँ या नहीं? है ना? करेक्ट है ना? ठीक उसी तरह से 300 को कौन पॉइंट कर रहा है? टी डॉट नेक्स्ट. अब गौर से देखो, सिंगल लिंक लिस्ट में
तो इसलिए हमें दो पॉइंटर लेना पड़ता था, एक टी और एक पी। तो पी का काम तो यहाँ टी डॉट प्रीवियस कर रहा है, राइट। टी अगर हम ले दे तो पी का काम टी डॉट प्रीवियस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो? क्विक। यस। नाउ राइट स्टेटमेंट नंबर 1। क्या लिखना होगा? टी डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट assigns हाँ या नहीं? क्योंकि टी डॉट नेक्स्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, उस नोड के नेक्स्ट फील्ड में हमें क्या स्टोर करना है? टी के आगे वाले नोड का एड्रेस, रेफरेंस, एंड दैट इज अवेलेबल इन टी डॉट नेक्स्ट। And link number 2, how it will get created? T dot next dot previous assigns T dot previous. Is it clear to all? क्लैरिटी में कहीं कंफ्यूजन हो, शांतिपूर्वक keep yourself cool and calm, think, look at the picture, try to understand the linking and do the code. It's damn simple. So I'm quite sure, मैंने कल ही कहा था, once एक दो दिन लगेगी कि we are going slowly, it is taking time, you are having problem, but जैसे जैसे कामों को करने लगोगे क्लैरिटी आने लगेगी। So you have to complete all the operations. May I ask one thing? बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे टी डॉट पी बनाया था, टी डॉट नेक्स्ट और टी डॉट नेक्स्ट, सर तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वह पहले से ही वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिफाइन है, प्रीवियस और नेक्स्ट उसके अंदर कंटेन करेगा। तो पीछे आना होगा तो प्रीवियस को असाइन करके नेक्स्ट ला सकते हैं सर। वही तो कर रहे हैं, ये टी डॉट प्रीवियस अलग से लिए थोड़े ही है, वो समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये आपको समझने के लिए लिखी गई है जी सर, कि मैं who is। कम करना चाह रहा हूँ जैसे मैं समझ रहा हूँ करके। ऐसा ही रहेगा ना सर, जैसे अलग से कुछ भी वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा जैसे उसमें बनाना पड़ा पी इक्वल टू हाँ, एक एक्स्ट्रा पी नहीं लेना बना पड़ा, नहीं लेना पड़ा, करेक्ट, यू आर राइट। तो यही तो एडवांटेज है डबल लिंक लिस्ट में कि वी कैन मूव, वी कैन ट्रैवर्स इन बोथ डायरेक्शंस, यही तो फायदा है ना? क्लियर है? नाउ हाउ मच स्ट्रेंथ यू हैव गॉट, उससे क्या सोचते हो? जस्ट गेटिंग आइडिया ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, can't you implement double? Try coding today, all the operations, all the structure, complete code, getting idea from single linked list. What is your response? Will you create? Don't force me to do right now. If you will stuck up, कोई भी अगर फंस जाओगे तो कल मैं स्क्रैच से कर दूंगा, but can't you try one day? Again, assignment. Create all
the above perform all the operations of a double linked list. वो तो लिखा हुआ है और ये आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गए. क्रिएट इट. ओके बनेगी. व्हाट रिस्पॉन्स? यस डू इट. कहीं किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम आएगी, फॉर दैट वी आर देयर. लेकिन जब तक करोगे नहीं समझ पाओगे. आज इतने सारे टास्क हैं कि वी कैन go on giving ideas, and you need to spend huge hours, 4 to 5 hours of coding and doing very operations very clearly and understanding them. किसी को कोई confusion हो तो आप पूछ सकते हो. Okay. Shall we discuss some more problems? Now let's come. Right now let's discuss stack using single linked lists. Let's understand by figure. Yes, अगर आप फंसोगे, अगर नहीं कर पाओगे, आंसर इज यस. आज मैं देखना चाह रहा हूं कि योर स्ट्रेंथ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल. ओके ऐसा नहीं कि मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं तुम अपने इमेजिनेशंस को, अपने पावर को कितना यूज कर सकते हो. ये हमें अच्छा लगा. बट ये डीएलएल के लिए ऑप्शन है. बट stack using single linked list easily you can create. stack क्या है पहले से ही जानते हो, मैं पिक्चर से आपको समझा रहा हूं. नाउ आप तो जानते हो stack में आप लेते हो टॉप. टॉप का काम क्या होता है? टॉप मोस्ट आइटम को इंडिकेट करना. अब लिंक लिस्ट में मैंने हेड के जगह पे टॉप ले लिया. That means a stack is empty. A stack is empty. A stack is empty. खाली है. अब let's keep one data push operations. देखो जरा गौर से. Push operations, push 100 into a stack. How the figure will look like? How the figure will look like? Top will point to topmost data. Let us say 100. यहां तक तो ठीक है, बहुत इजी है. Let's push another data. Push another data 200. अब यहां देखो गौर से. 200 का मतलब एक ऊपर नोड बनेगी जिसके अंदर 200 होगा एंड 200 इसको रेफरेंस करेगा एंड देयर आफ्टर दिस विल बिकम टॉप. आई बात समझ में? Is it not simple? Let's push one more data. मेल जो है 200 के साइड में आएगा ना सर.
हाँ, अब देखो फिगर बनाने के तरीके को बस बदल दिए। अभी हम लोग लिंक लिस्ट में हॉरिजेंटली बना रहे थे, अब इसको वर्टिकल कर दिए। थोड़ा सा गौर से देखोगे तो तुम इजीली कह पाओगे विच ऑपरेशंस इन सिंगल लिंक लिस्ट वी आर परफॉर्मिंग। गौर से देख के बताओ। आई एम वेटिंग फॉर 20 सेकेंड्स, तब तक हम एक और नोट बना रहे नहीं हैं। सर, ये जो नल है वो 200 के साइड में आएगा ना? नहीं, जो फिगर एकदम सही है, इसका मतलब 200 पॉइंट कर रहा है 100 वाले नोट को, मतलब 200 के पास 100 वाले नोट का एड्रेस है, दैट इज रेफरेंस। सर ऐसा तो नहीं है सर कि हाँ बोल। 200 है तो 2 बार होगा और 300 है तो 3 बार होगा। नहीं भाई, 200 है तो 3 बार होगा ही क्या है, ये तो वैसे ही हम कोई नंबर ले रहे हैं, नंबर हम बदल दे। 58 कर देते हैं, 59 हो गया, टाइप रहने दो। डाटा पे क्यों सोच रहे हो, जस्ट नंबर है। ये लिंक लिस्ट में सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही है, सिंपल ऑपरेशंस, वेरी सिंपल ऑपरेशंस। सोचो ना। नाउ तब तक हम एक नोट की फिगर बना रहे हैं, सोच के बताओ। 59 and after that this is pointing to this node and ये pointing के बाद top will move up। समझ में आई what type of operations on? ये हम एक बार पुश किए, इसके बाद सेकेंड टाइम पुश किए, देयर आफ्टर थर्ड टाइम पुश किए। समझ में आई कि व्हाट ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट? लेट मी राइट क्वेश्चंस। could you could you understood that what operation is taking place on SLL? क्या समझ में आई? कौन सा ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशंस? देखो इस हॉरिजेंटल फिगर को वर्टिकल बना दो, बना दे। हॉरिजेंटल क्यों, वर्टिकल, सॉरी, वर्टिकल फिगर को हॉरिजेंटल बना दे। वर्टिकल क्यों मैं बनाया हूं? क्योंकि स्टैक जैसा फिगर दिखना चाहिए कि वी आर स्टोरिंग न्यू डेटा ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियस, ऑन टॉप ऑफ। बट इस वर्टिकल फिगर को हॉरिजेंटल पेपर पे बना के देखो, इजिली पता चल जाएगा विच ऑपरेशन। क्या मैं बोलूं या तुम लोग बोलोगे? सर थोड़ा डाउट है सर। पहले डाउट नहीं, इसको हमको बताओ समझ के, फिर हम आपके डाउट को देख सुनते हैं। मैं समझ के बताता हूँ इसको सर। हाँ बोलिए। फर्स्ट डाटा ठीक। 59 रहेगा, सेकंड 200 रहेगा, थर्ड 100 रहेगा, वो नल कंटेन करेगा। अपेंड ऐसा रहेगा गलत क्या? आंसर, अपेंड न्यास गलत आंसर। अपेंड कैसे हो गया? तुम लोग सुनो ना, पहले सुनो जो मैं कह रहा हूँ। ये जो 3 फिगर हम बनाए हैं, इस फिगर को हॉरिजेंटली बनाओ, वर्टिकल के जगह पे अपने पेपर पे दिख जाएगा। करते ही नहीं हो जो मैं बोलता हूँ। एट बिगिनिंग है, एट बिफोर नहीं है शुभम, एट बिगिनिंग। देखो मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 ऑपरेशन जो पुश है, फर्स्ट पुश में 100 हुआ, हाँ या नहीं? सेकेंड पुश में 100 के पहले 200 हुआ, एट आफ्टर कैसे हो गया? 200 इज बीइंग इंसर्टेड बिफोर 100, ऑलवेज बिगिनिंग में ऐड हो रहा है, एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग। मैं कोड लोड करूं? मैंने आज एक्लिप्स अभी खोला नहीं,
इक्लिप्स। एट बिगिनिंग फिगर देखो, सबसे पहले 100 हुआ, 100 से पहले 200 इंसर्ट हुआ। अब 200 सबसे पहला डाटा है, उसे भी पहले 59 इंसर्ट हुआ। एट बिगिनिंग हो रही कि नहीं हो रही? एट बिगिनिंग है, तुमको बोल रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल विच एक्चुअली आई हैव टू शो, बट आप हॉरिजॉन्टल बना के देखो ना। एट बिगिनिंग कहाँ गई? एट मैंने बिगिनिंग। यही तो बोला सर। हेलो। हाँ तो मैं यही तो बस, बोला, पहला डाटा 59 है, उसका सेकंड डाटा 100, थर्ड वन इज पहला नहीं है ना वो। मैं क्यों आपको रोक रहा हूँ, नहीं सुन रहे हो? पहला नहीं है ना, पहला डाटा तो सबसे नीचे दबा हुआ है। हाँ, लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंगली बोलोगे तो आप बोल सकते हो पहला डाटा। उसको हॉरिजेंटली बनाने के बाद हाँ तो 59 हमको, पहला, तो हमने आपको 200 कुछ, हमने क्वेश्चन क्या पूछा देखो, कुड यू अंडरस्टूड दैट व्हाट ऑपरेशन इज टेकिंग प्लेस? तो उस ऑपरेशंस का नाम हो गया एट बिगिनिंग। हाँ या नहीं? सर। हुआ ना? अगर तुम भी यही समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात, कांग्रेट्स। बट अब एट बिगिनिंग, अब देखो ये मैंने वहां से बस कोड को कॉपी पेस्ट करके ले आया। अब इसी का नाम बदल के हम क्या कर देंगे? पुश। एंड हेड का नाम चेंज करके क्या कर देंगे? टॉप। गॉट द पॉइंट? पॉइंट आई बात समझ में कि नहीं? हाँ या नहीं बताओ? सो क्रिएट स्टैक यूजिंग SLL, सिंगल लिंक लिस्ट ऑपरेशंस। बस आपको पुश फंक्शंस बनानी है। लिंक लिस्ट क्रिएट करने में जो हम लोग ले लेते हैं हेड, SLL क्लास के डेमो के अंदर, SLL के अंदर जो हम लोग यहाँ हेड लिए, दिस हेड लाइन नंबर 3, हम क्लास का नाम कर देंगे स्टैक। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वी आर गोइंग टू क्रिएट लिंक लिस्ट, वी आर गोइंग टू क्रिएट a stack. So stack will contain instead of head what? Top. And it will have only 2 operations. And empty full वो तो ठीक है, वो तो ऑलरेडी जान रहे हो, तो यूजिंग एरे क्रिएट हो गई। यहाँ इज फुल की तो बात ही नहीं होगी, एम्प्टी हो सकती है। फुल कब होगा? कोई लेंथ तो यहाँ फिक्स नहीं एरे की तरह। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? सर स्टैक ओवरफ्लो होगा ना सर? ओवरफ्लो यहाँ कैसे होगा? यहाँ साइज फिक्स है, डायनेमिक कंसेप्ट से बन रही है, तो जितनी हम नोट्स बनाएंगे उतना स्टोर होता जाएगा। ये ओवरफ्लो तब होगा जब कंप्यूटर की डायनेमिक मेमोरी बढ़ जाएगी, तो वो दैट इज डिफरेंट एरर, वो तो मेमोरी फुल एरर होगा। मैंने एरे की कैपेसिटी जैसे फिक्स करते हैं, लिंक लिस्ट में क्या हम कोई कैपेसिटी फिक्स करते हैं या नहीं करते? नहीं करते। ये ओवरफ्लो सिचुएशन इतना जल्दी नहीं आएगा। ओवरफ्लो होने का मतलब डायनेमिक मेमोरी क्रिएशन फेल्स, मतलब दिस न्यू लाइन विल फेल। मेरी बात समझ में आ रही है? न्यू न्यू ऑपरेटर फेल्स, सो न्यू न्यू कब फेल होगी? न्यू विल फेल, तब तो वो आपका जावा लैंग्वेज एक्सेप्शंस वगैरह जनरेट कर देगा ना। न्यू विल फेल ओनली व्हेन heap is full, heap becomes full। और हीप किसको कहते हैं? रैम का वो एरिया, पार्ट ऑफ रैम
that is used for dynamic memory allocations. तो ये मेमोरी फुल एक्सेप्शन जनरेट होगा, और वो एक्सेप्शन जनरेट होगा तो और भी प्रोग्राम की कोड में बदलाव करना होगा, वो तो आपका कंप्यूटर इंटरप्ट कर देगा, आपकी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगी देयर आफ्टर वंस एक्सेप्शन इज जनरेटेड। सर अभी ये स्टैक है तो इसमें मिडल में ऐड कर सकते हैं? नहीं तो फिर वो स्टैक कैसे रह जाएगा, तब तो बदल जाएगा, इसलिए दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अब ये सिंगल लिंक लिस्ट नहीं रहा, ये सिंगल लिंक लिस्ट से मिलता जुलता हुआ ना, सिंगल लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम दो ही ऑपरेशंस बनाएंगे, एक पुश एंड एक पॉप, एक नई कोड बनाओगे पूरी तरह से, पुश एंड पॉप। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? यस सर। पुश पॉप फुल एम्प्टी जैसे बनाते हो, जो सोचते हो उसके हिसाब से एक नई सोर्स कोड, नई कोड बनाओगे यूजिंग लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट। बस हमने इस फिगर से समझो, हमने अब हेड जैसे पॉइंट कर रहा था फर्स्ट नोड को, इन प्लेस ऑफ दैट वी आर हैविंग टॉप। तो इन डबल लिंक लिस्ट में भले ही आपको थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकता है, कोई किसी को आ जाए, बट इन स्टैक, अच्छा स्टैक क्रिएशन में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, पॉप कैसा होगा? पॉप का मतलब रिमूव। अभी स्टैक जो देख रहे हो, लेट मी डू टेस्ट फॉर पॉप आल्सो 2-3 टाइम्स, 2-3 बार हम पॉप भी करते हैं। You will understand much clearly by using picture. So when I am going to do pop operations, pop, अगर हम एक बार पॉप करते हैं तो ये हटेगा, राइट? हम यहाँ पे अगर पॉप किए, pop pop, what would I get the result? 59. When the result is 59, what will happen to this top? This will come down. हाँ या नहीं? So top is coming down, top is coming down. Now, if I do one more, देखो गॉड्स, one more, पहले फिगर करेक्ट कर ले। If I do one more pop, what happens? We are getting 200. So this top is coming down. So this will become top. और ये तो रिमूव हो जाएगी ना। तो ये कैसा ऑपरेशन दिख रहा है जब लिंक लिस्ट से कंपेयर करोगे? तो कोई भी सोचो, could you understood what type of operations, इसके कलर को भी बदल देते हैं, could you understood what type of operation is taking place? ये ऑपरेशंस का नाम क्या हो गया? आंसर डिलीट लास्ट। सोचो फिगर, एड बिगनिंग, डिलीट फर्स्ट, करेक्ट, डिलीट बिगनिंग, राइट, इसको बोल्ड कर दो। एड बिगनिंग जैसे ऑपरेशंस का नाम हुआ, उसी तरह से ये रिमूव बिगनिंग हुआ। ये अच्छी बात हुई ना, ये समझ में बात आई। रिमूव डिलीट कुछ भी नाम दे दो, डिलीट बिगनिंग मतलब बिगनिंग एंड से अगर डाटा इंसर्शन और डाटा रिमूवल का काम करें तो हमारा क्या बन गया?
stack. Can't you do the code? Implement the code for stack as an assignment using single linked list. तो आप इसको कर लोगे. टास्क कोडिंग बहुत काम करना है. Implement stack using SLL. देखो तो स्टैक बनाना तो बहुत आसान हो गया. अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट को यूज करके ऑपरेशंस बना चुके हो तो दो ही फंक्शन तो बनाना है. ये हो गई आपकी पॉप ऑपरेशंस, डिलीट बिगिनिंग, एंड ऐड बिगिनिंग हो गई पुश ऑपरेशंस. इज इट नॉट? पुश ऑपरेशंस क्या हुआ, नीचे लिख देता हूं. पॉप ऑपरेशंस हो गया डिलीट बिगिनिंग. इट कैन परफॉर्म ओनली 2 ऑपरेशन. 2 ऑपरेशन तो मेन है. अब इसके बाद आप कुछ भी करते हो, हाँ, डाटा स्टोर एंड रिमूव 2 ही काम होगा. अब स्टैक फुल है, एम्प्टी है, ये सब आप अलग जो भी मर्जियां बनाए. बट लाइक लिंक लिस्ट, इंसर्शंस एनीवेयर, डिलीशंस फ्रॉम एनीवेयर, ऐसा काम नहीं होगा. तो फिर वो स्टैक नहीं रह जाएगा ना. आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? तो आज की क्लास में वी कुड कवर all these concepts: single linked list, double linked list का idea, as well as stack using SLL. तो सिंगल लिंक लिस्ट को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग स्टैक, और सॉरी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. If I implement a stack using single linked list or using array, what difference you find? जरा सोच के बताओ. What difference you find? array की साइज लिमिटेड होगी, फिक्स होगी. लिंक लिस्ट में साइज रेस्ट्रिक्शंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. गॉट इट? प्योर डायनेमिक होगा, as per your demands. Whenever your requirement is, whenever there is demand, your need, node gets allocated and changed into the data structure and result is found. तो आपके लिए बहुत सारा कोड है करना. आज तो हमारे एंड से कोई कोडिंग नहीं है, बस ये आपका वन नोट स्लाइड है. वन नोट की जो आपको दिख रही है, दैट विल बी शेयर्ड. आपको कोडिंग करनी है, आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है, डाटा रिमूवल इन सिंगल लिंक लिस्ट करनी है. सबसे पहले डाटा रिमूवल इन सिंगल लिंक लिस्ट. शुड आई समराइज योर टास्क? आज के टास्क क्या क्या है, गौर से सुनो. फर्स्ट टास्क, removing data from single linked list. This is the first task. Today's task or assignment, whatever you say. Number 1, remove or delete, कुछ भी कर सकते हो. remove data in SLL. Second task, implement stack
using single linked list concept. Third task, implement double linked list. ये सारे आज के आपके टास्क हो गए. Is it clear? Any queries? कुछ भी पूछना चाहते हो? कहीं भी डाउट है? Do you find any doubt? No. Very good. पहली टास्क SLL का कंप्लीट कर लोगे. मैं DLL को इसलिए नीचे लिख दिया. दैट पहले आप स्टैक ही बना लो. स्टैक के स्पेलिंग STACK. पहले आप स्टैक क्रिएट कर लो यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट. अब गौर से सोचो. For creation of a stack, try to understand the figure which will be the best as per the requirement. Single linked list or double linked list. Think the requirement and give me the final answer. Which is the best options? DLL Sudarshan, on what ground you said DLL? Sudarshan, what is the ground of saying DLL? DLL की यूज तभी करें जब बोथ डायरेक्शंस में जरूरत है ट्रैवर्सल करने का. क्या तुम्हारा पुश पॉप ऑपरेशंस देख के कुछ भी लगता है कि हम बोथ डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं? नो, वी आर, दो ही तो ऑपरेशन है. We are traversing in both cases only in one directions. So why should I waste memory by taking double linked list? लेकिन अगर आप कोई एग्जाम में पूछ दिया तो डर किस बात का है? Create it. तो मैं लिख देता हूं note. We can create a stack both. We can create a stack by using both concept of DLL and SLL. हम दोनों कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, बट since only कर सकते हैं, बट व्हाट इज द बेस्ट? बिकॉज एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग नीडेड है. सिंस ट्रैवर्सिंग इज, कोई भी पुश के समय देखो एक ही लेवल आगे बढ़ रहे हो. सिंस ट्रैवर्स का मतलब ठीक है, यू कैन विजिट ऑल द नोड्स, बट यहाँ पे कहाँ जरूरत है एक ही बार ऊपर जाना या एक ही बार नीचे? दैट इज व्हाई आई रोट ट्रैवर्स. सिंस ट्रैवर्सल is NWE needed in only one direction. Hence, only one direction. Hence, SLL will be the best choice. Got it? But if anyone asks, you can
अगर क्वेश्चन में कोई स्पेशली पूछ दे, you can use DLL also. If not needed, why to waste memory by taking DLL? क्योंकि वो अदर लिंक की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं. Is it clear what I said? सर अगर ऑडिबल, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं. सर अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर एसएलएल बेस्ट है सर, है ना? हाँ यस, ऑफ कोर्स SLL बेस्ट है. DLL लेंगे तो मेमोरी की बर्बादी ही ना होगी. हमें उस डीएलएल अपोजिट लिंक की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ा. फिगर देख रहे हैं ना, पुश पॉप दोनों फिगर. हम तो स्क्रीन ये स्लाइड शेयर कर ही देंगे, आप जितनी बार चाहो ऊपर नीचे करके देख सकते हो. तो दोनों बार देख रहे हैं, हम एक ही डायरेक्शंस में आना चाहते हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर. तो फिर अपोजिट डायरेक्शन वाला लिंक तो हमारा वेस्ट ही होगा. तो अननेसेसरी मेमोरी हाँ कंजम्पशंस होगी. I think what I wanted to explain you that should have become clear to you all. Yes, yes sir. Okay. तो अब ये टास्क है. अब हमारे समझ से बहुत सारा टास्क हो गया. हमें एक्सप्लेन करना इजी था because everything was based on previous concept. But when you sit and implement, you require time. Thus, we will stop this sessions today right now, and tomorrow hopefully you should have almost no problem. Sit coolly and implement. Still, if there is any problem, share me. Coding can be done very quickly. Code is not at all problem. Okay, thank you. Thank you, sir. Good night. Good night.